Dear students, in today's lecture, we will be discussing about the various forms of industrial dispute. In the earlier recording, we have already discussed the industrial meaning of industrial disputes and reason for industrial disputes. Now, in today's video lecture, we will be discussing about what are the various forms of industrial dispute. The As we all know, strike, lockouts are the various forms of industrial dispute. So in this series we will be discussing in detail the meaning of the strikes. See, strike is basically a form of showing discomfort, or disagreement over the various things. Like, it is basically slowing down or ceasing of work is a strike. And strike is from basically the worker side, where the worker stop working, or stop the work within the premises. So these are the basic types of strikes. We have sympathetic strike. uh, in this form of strike, basically worker क्या करते हैं कि like sometimes the problem was not faced by this specific that group of person, but a single person have a problem, और उसी की प्रॉब्लम को लेके जो वर्कर्स हैं, to sympathize that person, they strike and they cease, means they stop working. Then there is a general strike. General strike is basically a form of strike where like जहाँ पे एक किसी जनरल रीजन की वजह से सारी इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें स्ट्राइक हो जाती है. देन वी हैव अनऑफिशियल स्ट्राइक्स, लाइक अनऑफिशियल विच इज नॉट रिकॉर्डेड, बट देयर इज एन strike over there. Then we have sectional strike. Sections, like every industrial unit have a different sections. Say suppose HR, manufacturing and other. सो यहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन वाइज वहाँ पे स्ट्राइक होती है. देन बम्पर स्ट्राइक इज लाइक इट्स काइंड ऑफ लार्ज स्केल strike. Then we have sit down strike, which is also stain, tool down, pen down strike. यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स क्या है, वो काम करना बंद नहीं कर देते हैं, या विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द स्ट्राइक दे हैव इन द इंडस्ट्री, वो वहीं पे ही रहते हैं, एंड देन दे स्टॉप वर्किंग. वो मशीन पे काम नहीं करेंगे, वो पेन डाउन कर देंगे, वो टूल डाउन, मशीन शट डाउन कर देंगे. तो वो सारा हमारा सिट डाउन स्ट्राइक होता है. देन स्लो डाउन स्ट्राइक है कि दे यहाँ पे वर्कर्स क्या है कि वो अपना काम करना बंद नहीं करते हैं, बट वो धीरे धीरे काम करते हैं, कि सो दैट दे कैन डोंट गेट मीट आउट विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ strike. Then lightning strike, lightning thing, like a kind of a candle march and all that, वो होगा. Then hunger strike is like भूख हड़ताल वो कर देते हैं, they stop having their lunch, eating. So वो हमारा hunger strike है. Then next is forms of industrial disputes are lockdown, lockout, घेराव, picketing, boycott. Lockout is basically it is in a management version of the strike, where work site is closed to prevent employees from the working. जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयर होता है वो ना अपनी फैक्ट्री के गेट पे एक बड़ा सा लॉक लगा देता है, एंड देन दे प्रिवेंट द वर्कर्स टू वर्क इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ द. घेराव में क्या होता है कि घेराव में एक जो भी हमारे जो टॉप मैनेजमेंट पीपल्स होते हैं, उनको जो एम्प्लॉयज हैं या जो वर्कर्स हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, एंड उनको अंदर फैक्ट्री के प्रीमिसेस में नहीं आने देते. पिकेटिंग इज बेसिकली कैरिंग बैनर एंड कार्ड टू शो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एग्रेशन. यहाँ पे क्या होगा कि वो कैंडल मार्च काइंड ऑफ, या झंडे लेके और बहुत जोर जोर से नारे लगाना, ये सारा हमारा picketing में आएगा. And then we have boycott. Boycott is disrupting natural functioning of the enterprise. Means like वो काम नहीं करेंगे वहाँ पे. Then if we talk about the industrial dispute settlement machinery, now how we can settle these type of disputes, means like if a strike arises, then how we can settle it down.
So we have basic three form of industrial dispute settlement machinery. One is the conciliation, another one is voluntary arbitration, and then we have a adjudication. See, conciliation is basically representative of workers and employees. Employees are brought together before a group of person to persuade them to come to a mutually satisfying agreement. मीन्स बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सिलेशन में जो हमारे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम साथ में लेके आते हैं एंड वो